is the north value. You can paste. I think it is not copied properly. So this is first HIP now. Okay. Then we take the second HIP. Copy this point. Paste it. Copy this point and paste here. I will take only 3 or 4 HIPs. Okay. So we'll know if you have all the HIPs, then how you can proceed. Okay. I will take this HIP, third number. This is the gold coin. This is the gold coin, sir, and put your sign on. Okay. Suppose I have 3 HIPs. Okay. 1, 9, 2, 3. And I will mark this 3 HIP at this location. So first, you can change. Either you can save as a like .csv, comma delimited format. If it is possible in this, I will try to save that. Otherwise, I will use another method. Save as. I don't have in this WPS format. Yeah, but if you have this the paid Microsoft Excel, then you must have that format. Okay, so I will use different way. I have these 3 coordinates, right? And I can save this. Directly paste one object. Let's say I create one RC small. This is block. Okay. Now I will copy this. Click from here and copy this coordinate.
Paste. Let's check that IP. They placed reverse. Okay. So I will use this to reverse. First this and this. They must come. Okay. No issue. Suppose I will create some point here itself. Second HIP, third, fourth, fifth, and 8 HIP. Okay, suppose you're getting a point, uh, and this point is representing a HIP point. Okay, this is your center line points. Now, based on that, we will calculate. We create the alignment. So we have the alignment creation tool. This is the first method. Just give the name. Let's say first. Then you have to define what type of the alignment it is, whether it's a center line, offset, curve, return, rail, or miscellaneous. For if you are using for any utility like dry utility, wet utilities, like that. So you use the center line because we are creating a master center line. And here you can define the starting station. If your starting station is not start with the zero channels, then you can start with the any specific channel where your alignment is started. Okay, even you can change later on if you want to change. Then here is a site. Site is basically creating for the grading purpose and not for the our corridor. This is basically used for cut and fill. If you create any feature lines, they are intersecting each others. If like two feature is are intersecting, so they influence each other. So if you're creating a different sites, so that feature lines are not influence each others. I will explain you in the grading part. Okay. And this is the alignment style.
like you can change what type of the alignment it is, whether it's existing and layout, base, offset, proposed. So this is our proposed type of the alignment, and you can label all, turn on the label set, whether no labels or labels, major, minor changes, all the things. So let's say I just want to open the all labels, and here is the design criteria. And right now, if you check here, the design speed is 100 kmph, and if I go there, there is no XML file for the Indian style, right? Because I did not install the country kit. I have only the template file, .dwt file. If you install it, you will get the .xml file of the Indian country kit. And if you use select that, then you will get the IRC code. So I don't have that one. That's why I'm asking you. If you have, you can share with me that .xml file. Okay. So I'm using this the metric roadway design standard, and under this we have the only the ASTO. Okay, and based on that they have 4%, 6%, 8% super elevation criteria. So I'm using this. Let's say our super elevation maximum will go up to the 6%, and transition length will be 2 lane, and attainment method will be the ASTO crown roadway. Okay, so I select this. Now we have two options. Either we can create a alignment by using tangent tangent method, or tangent with curve method. So the best method is to create the first tangent, then you can apply the curve as per your requirement. Suppose somewhere you just require the circular curve, somewhere you require the spiral curve, spiral type. Both the type of the curve you required. Okay, it depending on which road it is, whether it's a plain area road or it's a hill area road. Also, you have the curve and spiral setting here. And suppose you want to fix the at least minimum. So you can change the spiral length here. Let's say 50 will be the minimum. So you can use this. And if you want to change the type of the uh, curve, so you can change. If you just want to change cubic parabola, you can change it. And if you're using any other type of the curve, then you can use. So we're using clothoid type. So I'm using clothoid, and the minimum radius is 200. Okay. So this is applicable when you are using this tangent with curve. But if you are using tangent no curve, that means you are applying manually curve. Okay. So first I will go with this. So this is the first, the second, third, like this. We can fix that one. Okay. This is a IP. Now we can check. This is the first IP. We have the curve. This is a second IP. We have another curve. This is third IP. We have the curve. Okay. Then here is a fourth IP and fifth IP. Okay. And we can check. Let's what design criteria we are not following. So based on ESTO, if your speed is 100 kmph, it says your minimum radius should be 435. Okay, but as per Indian codes, we have different criteria, right? And the minimum spiral length required is 48. Okay. Suppose if I change this, the radius, first radius is, let's say, 400. You can see we get the error. It says that you are violating the design criteria.
Even if I change the minimum spiral length also, let's go for 40, then we get the error for the spiral length also. Okay. So if you provide the minimum criteria, let's say you can go for any upper side is you can go any radius, but at least for minimum radius, you have to provide as per the design standard. Let's say 435, if I apply, that error is resolved. And this side also, if I provide the 48, this curve length problem is also resolved. Okay. Yeah. Now I just want to highlight with the different color. So we understand where is the curve, where is the spiral. Suppose I want to display the curve with this color. Spiral will be this color and length line will be the red color. Okay. So this is a curve and this is a spiral length and this is your tangent length. Okay. This is the first method. Second method is like suppose if you have already one polyline as your reference. Let's see this. And suppose I provide the radius also. Fill it radius 400. Second type is like if you're getting the one AutoCAD file like that in which you have the tangent and the curve, even the spiral. Okay. So what you can do, you can just directly convert this polyline into alignment by using create alignment from object. So just select the alignment. Now just check the direction. It is starting from this south direction to the north direction and give the name. Let's say it's a 2. And if you want to label, just label it. This time I'm using only major minor and use the design speed criteria. Okay. Okay. So you can see here we getting a one error. Okay. How we can check under the geometry editor? Here is a tabular. We getting the error based on the this criteria at 4%. If you are using it, then the minimum radius is 492. Okay. And we just provided a 400, 400, 400 for every radius. So we're getting all the errors. So if I resolve this, so you have to provide at least 492 or more than that. So 500. Even 492 is okay. 500. Okay. Now suppose instead of here the circular curve, you like to add the spiral curve spiral, right? So how you can do that? Just click the alignment, go to the geometry editor, delete this element. Okay. And from here we have the multiple option for the curve. Okay. So if you just want this kind of the curve like a free circular curve, then you can use it. If you want with the through point, that means what is the maximum radius is possible at this location, you can go with that. And if you want to go like a spiral curve spiral, then we have this option. Okay. So I am using this, the first entity and the next entity less than, and let's say this time 500 will be the radius and spiral I will take as a 80 and 80.
Okay, so automatically the circular curve is changed, now become in spiral curve spiral. Up to here, any question? किसी को भी कोई डाउट हो? नहीं सर, डाउट नहीं है। यस गौतम सर। नहीं है सर, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। Now third type is, I will third way we can create a like your alignment is like this. Suppose you have a tangent. Let's giving the name is third. Let's say first tangent, second tangent, third, fourth, fifth. Okay, same thing. You have to create the first the tangent, then you provide the type of the curve. Okay, so I'm using again spiral curve spiral. Say 500 and 50. Here, if suppose I go with the through point, okay, between two entities. So if I select the first one and the next one, so I can drag and I will check what is the maximum radius is possible. Okay. So if you can see here is no possibility of providing a curve. So if you go more closer, this much is the maximum, like this much. I mean the sorry minimum side. Okay. So this way you also can check that suppose you just want only a free circular curve, then you can just apply simply the curve first, next, less than this, and provide let's say 400. Okay. And one more I will apply three spirals, 60 and 60. Okay. So this is the way you can able to create your alignment. Okay. Now suppose here I will do some experiment in this alignment. Suppose our this label is parallel to this alignment, right? So I just want to um, project this label to the perpendicular to the alignment instead of the parallel to the alignment. Okay. And also I just want to change the interval of this chain edges. Instead of 20 meter, I will change to 50 or 100. Okay. So under this alignment properties, for labels, we have to go under the label alignment labels. Okay. And here is the option like what type of the labels you want to highlight under this alignment. So you can see here we have the majors labels, station labels, minor, geometry points, station equation, design speed, profile geometry points, and the supercritical points. Okay. And our major stations is parallel with the alignment and our increment is 20 meter. So let's say I want to change this every 50-meter interval. So it will change and this parallel tick I just want to change as a perpendicular. So I will change to perpendicular. Okay. So the interval is changed. Okay, every 50-meter intervals we have now changes. Now suppose I want to change the chain edge.
Okay, beginning Chinese will be instead of 0, 0, it will be start from 2 kilometer, let us say. Okay, so under this alignment properties, you have to define the first starting location, reference point. Suppose this is our reference point, and this will start with 2 kilometer. So now your starting station will be 2 kilometer, and every 50-50 intervals is automatically changed. Okay. Now suppose you want to highlight with a different color, and also you just want to mention the design speed within this the changes. Okay. So again, go to the alignment labels, and you can do the little setting here. Let's say I just want to highlight this with the red color with Arial. Okay. And if you go again the properties, and here I just want to add design speed also, and this will represent equals to S. Okay. And if I apply, click OK, okay, and apply, you can see every stations like every changes. Now we have the speed also. Okay. In this, you can say the design speed right now is 0. So we have to provide the design speed. So under the geometry editor, alignment, go to the alignment properties also, or you can select from the design criteria also. So here there is no tick mark we have given right now. Okay, so I will tick this. So now we using ASTO. Okay, and if you are using Emacs, then you have different criteria, and if 6% you using, then you have the different criteria for a speed. So I'm using 4%, 2 lane and 4 lane, which is as per your the TCL, whether it's a 2 lane or 4 lane. Here you can define, okay, from which end it start from the kilometer is 2. Okay, if I add more the criteria, let us see, and I will define the changes here. Let's say I want to change the design speed from here. This will be like 80. Okay, and again here this will be like 70, and suppose from here it will be 110. Okay, now I have 4 different design criteria in a singular. Okay, 100 is the maximum speed, so I will go with 90. Okay, now we can check. This is for 100 kmph. Okay, then from here, the design speed is changed from this changes to plus 719.9, and up from here to like up to here, the design speed is 80. Then after that, we have the 70 speed. Okay, you can check. Previous here is 80, and now here 70. So this way you can able to provide the multiple design speed within the criteria. Anyone have any questions? किसी को भी कोई डाउट हो इसमें?
No one? Okay. Now, suppose if you want to create an offset of this, okay, edge of payment, edge of shoulder, you just want to highlight. Okay. So if you creating an offset like this with the command, let's say 3.5 this side and this side, one this side, one this side. Okay. And here I will create the offset by using alignment offset. So I will show you what is the difference between that. So I will change this to perpendicular, and you can create the offset either from here. You get the option once you select the alignment, offset alignment, and here you can define the number of lanes. Suppose we giving a number of lane 2, this side also 2, and every 3.5 meter intervals. That means the width of the your carriageway is 3.5, 3.5. Okay. You can select offset alignment style. Even you can change if you want to change the color of your offset alignment from here. And if you just want to label the offset also, just turn on the labels for the offsets. Right now, I don't require the labels for the offset. Here is the option like you can apply the widening to your offset. Okay. And if you have the IRC, you can select from the IRCs. But here is I have only S2, so I can use the S2 formula only. So by using S2, we can select which side you want to provide the your widening, whether inside, outside, or both side. Okay. So I will apply only inside and create. Okay. So now we have the offset. One is this by creating through alignment, and one we just creating through like a command, AutoCAD command. Okay. Suppose if I change the alignment from here, okay, and shifting from here to here, my this offset of the alignment is not changed because this is AutoCAD alignment. Okay, they are the reference. But if I change the this alignment which we creating through offset alignment, if I change it, you can see all the offset alignment is also shifting. Okay, so this is a difference between the creating a offset through offset alignment and through your the command. Okay, also if you creating like this your offset alignment, then this will not give you any output. That means it will not give you any report of your offset. But if you creating offset like this of your alignment, then you can take the report of this alignment also, because it's now a single alignment itself. And you can see it's a 7 meter, right? And this is 3.5. Anyone, if you have any doubt, you can ask. Okay. Okay. Now, one more thing. Suppose you want to take out the points, okay, from this alignment at 20 meter intervals. Okay. So how we can take out? So we have the option is under the points, create points from alignment under the measure alignment. And here in point creation tool, you have to change this manual to the automatic. Change this to automatic also. If I select the alignment, start station, end station,
offset will be, if you want exactly above this alignment, then your offset should be 0. If you want uh, any offset value from this your master center alignment which you selected, so you can provide the offset value. So I am just want only above the alignment. Now you can change the interval, let's say every 50-meter interval. So you can see all the point is created above the alignment. If you want to take out the coordinate of these points, you can take out. Okay. Even you can highlight these points into the profile. If you have any questions, you can ask, or we will go for the profile. Hello. किसी को कोई डाउट? No, sir. नो, ठीक है. No, sir. ओके. तो प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ पे प्रोफाइल टूल है, यहाँ पे जाना है आपको. क्रिएट सरफेस प्रोफाइल पे फर्स्ट जाना है आपको. यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है. देन यू हैव टू सेलेक्ट द alignment, and if you have multiple alignments and you don't remember the name of the alignment, so what you do, just select that alignment from the drawing itself. Suppose I want to create the profile for this particular. Okay, so that alignment is number 2, and here is the number of surface. Suppose you created the multiple surface, so that surface is appear here, and based on your NGL you have to select, or any other surface you want to highlight in the profile, you have to select. So this is my NGL. Okay, so I just attach this NGL surface with this alignment. Okay, this surface is only appear once you attach. That means you have to add in this box the profile list. Okay, suppose if you not just selected like this and click OK, so that means this file is not attached here. So you have to add the surface which you want to add in the profile list here in the bottom. You must to check. Okay. Then you go for the draw in the profile view. And here you have to do little settings, like you can give the name of the profile view and what type of the grid you want to show. You just want to show the full grid, or if you want to change, you can change it. Okay. Later on, even you can change it. And here is the station range. Suppose you want to create for the entire stretch, then you can create. If suppose it is too long, let's say 1000 or 150-kilometer stretch, so your requirement is like in between some 80 to 100 kilometer, that's only 20 kilometers. So you can specify your range and you can define that station, and you can create the profile for that. Non, it's not a mandatory that you can create always for a full stretch. Okay, so but it's a very small, like a 10-kilometer stretch. So I'll pick the entire stretch, and here it automatically pick the maximum and the minimum elevation. Okay, if you want to change the any datum, suppose instead of 447, if you like to provide 445 or 440, so you can change that the datum value. Okay, so I will use this, and later on we can change it also as per my requirement. And this is the list that means we added in the our alignment, only the project site. That means your NGL. Click OK, and this is your the band set. Okay, right now we have the matrix system only in this style set. So I will import the Indian style set, and then we can bring all the band set from the Indian style. So I will use mostly, yeah.
this EG, and elevations only. Click OK. And hatch area I will use later on. And you can just place the location where you want to highlight your profile. Okay. If you don't want to see this grid, okay, what you can do, just go to the edit profile view style, because all the settings of this style set is under profile view style. So this is a graph, and right now your vertical exaggeration is 10. So we create 1:1. Every 1 meter will represent 1 meter, okay, instead of 10. So I will change to 1 meter. And then we have the grid. If you want to clip, you can clip the horizontal above, okay. And here is the title uh, content, okay. So if you want to change the style set of any profile title, you can change it. Okay. Here is the horizontal axis. Suppose you want to change the interval instead of 20 meter. Let's say you want to provide horizontal 100 meter interval. You can see that interval is changed. For a minor tick, if you want to change, let's say every 20 meter you want minor, it will change. Now, similarly for the vertical, if you want every 10 meter, so this will change. Okay. And suppose you don't want this grid, the vertical and the horizontal. So what you can do, under the prof here, we have the grid, this one, the horizontal and the vertical grid. You just disable this. Okay. So this is a matrix system. Like you have a chain edges, you have the existing one, okay, and the proposed one. Because we don't have any proposed here right now, so the label of the proposed is also same, okay. So how we can apply the Indian style set to this profile first? So I will bring that Indian style. First, I have to save this file. Now we can bring that file. So all the style set is imported. Now I will change. This is the band set and can import from the band set. And we have now Indian style set also. You can see. So I will use this IND crossroad. Here is finished existing horizontal, vertical, and chain edge. Okay. And just apply. Click OK. So you can see that band is changed. Now it is according to our requirement. Okay. If you want to change the grid view style also, if you don't want like this, you can change the grid view also instead of full grid. And if I go with LHS side only, okay, and again change graph equals to 1. Okay, so your datum is started with the 445. Okay, and if you want to change this datum, let's say 450. Okay, and uh,
its minimum will be the 450, we can change. So under the elevation, here you can define the specified height. So 450. So now your datum will be the 450. Okay. And suppose here you just want to highlight this, the red color, which is representing your the NGL. You want to change the color of this. Instead of red, I just want to highlight with the green color. Select and change the color of this. Okay. So now we have the existing ground profile. Okay. We have the band set. We have FRL, EG, level difference, horizontal, vertical, and project change. Okay. I will change this vertical after we design the design profile, because right now it's picking the value from this existing ground. So to create a vertical profile, design profile, we have the option is called a profile creation tool, and select the profile view style, and you can give the name design profile. And from here, you can select the profile style. And if you want to turn on the label set of your design profile also, so just turn on the complete label set. And similarly, here we have the vertical design profile codes as well. Like we have the ASTO here only. If you install the country kit, then you have the Indian country kit.xml file here. And under that, you have IRC code. Okay. So we get the same kind of toolkit tool by using, we can able to create our design profile. So we have both option, like you can go with the tangent with the curve, or just creating a tangent and then you can create a manual curve length. So I will go with the curve settings, and here you can control your length. If you want to control the minimum length, or by length or k values, it's up to you which you want to control. So let's say I want to control by length, so I will provide, let's say 100 is the minimum curve length. Okay, so first method is go with tangent and curve length. Okay, so if I started with this point, I will use some part with the cut and some part with filling. Here is going below the 450. So what we have to do here, we have to reduce the datum. Okay, instead of 450, again we have to go below. Maybe 445 is. So again, I will change this 445. Okay, so your NGL should be above from this. So this is your NGL. Okay, you can extend or you can add more tangent. So now we have the design profile and we have the existing ground profile also. Okay, you can adjust the label of curve.
Okay. And suppose if you want to change and want to check the curve criteria, whether we are follow or not. So you can see here, we are not following the minimum passing side distance at this particular location. Okay. So we have to either increase the curve length and radius here is this much. So let's go. It is almost straight. Let me check which one it is. This one. So we can move this, raise or lower. Suppose I just want to lower this. You can specify the chainage from where to where you just want to move, or you can move from here also. Move IP. So let's come down. You can specify the chainage from where to where you just want to move, or you can move from here also. Move IP. So let's come down. Okay. We reduce the let's radius. Curve length will be 200. What is curve length required here? That's 540 to 3850. Okay. Then we have to reduce then speed also. It says that our minimum K value should be the 520 if we providing this curve. Okay. Okay. Let me create one more curve, and this time I will create with the tangent. What it will say? Design to, let's say. Let's say this time. Somewhere here, I will pick first point. Here.
say more close to the surface. Last will be this. Change the color. Let's see, design profile. Okay. Now I will provide the curve, pre-parabolic curve. Let's say 200. Okay. Type B. Again 200. This is another IP. 300. Let's say 500. Okay. So you can see, if we're using like that, then we're getting different, the minimum passing side distance. Here is the minimum is 119 as per 100 kmph. So if I change this also 119, all curve is resolved. So you can control the K values. Okay. And let me delete the previous one, this one. Now you can play with this, the vertical curve. Okay. Under the geometry. Now you can play with the curve length or the curve radius, also with the grade in and out, right? Now suppose I just want to highlight this hatching pattern. With the hatching pattern, where is the cut and where is the fill will come. So we have the option under the profile view properties, hatch, just place cut and fill, and just check whether they are on or not. Yeah. So visibility is off right now. So I will select, click OK.
turn on the cart. Same thing like fill. Okay. Now let me change this band also. I will check what is the issue, why it is hatching pattern is not turned on. But first I will change this also the band set. Okay. And here is the FRL. Okay. Finished road level. So FRL is your design. So I'm changing this to design. Your this is NGL. That means EG. So I'm picking the same existing surface. And this is your the volume. So I will pick first one is profile is design to, and second one is your the existing surface. So they will compare it and giving the elevations of your the cut and fill. And then this is your the horizontal and this is your vertical. So for vertical, we have to change for the design to. And this is your project challenges. So you can see this vertical curve length is now changed. We can check here is the curve. This is your horizontal. So here you can see this is the information about this curve at this particular location. The radius is this much, k value is this, and the curve length is this. We can check from here also. This is your the k values. This is your the length of the curve, and what is that? Our point is the r value, radius. Okay.
Anyone have any questions in this? किसी को कोई डाउट? I will check the hatching pattern. I don't know. In the morning it is showing. Right now it is not showing the issue. आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी किस तरह का डाउट हो. I will check the hatch pattern again. Let me create one more here, the profile, and I will check that one. This one is showing and this is not showing. Why? And two. Okay, no problem. But you can hatch your, the profile like this Sir, by using this hatch pattern. I don't know what is the issue in the bottom one. बाउंड्री क्लोज नहीं होगा सर. It should not be like that. अगर आप देखें तो बाउंड्री तो क्लोज है यहाँ पे. बाउंड्री ये, क्योंकि बाउंड्री से कोई लेना देना नहीं ना सर, ये आपका प्रोफाइल है. बाउंड्री तो हमारा यहाँ पे भी क्लोज नहीं है ना. ओके. क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट तो वही होगा ना जहाँ से हमारा एनजीएल होगा. Okay, no issue. Let's say, like another things on which we will check is how we can superimpose the other profile if we have. Okay. For example, if we have the profile of this 3.5 and 7 meter, then how we can project the same profile into the master profile. Okay. तो मैं क्या करता हूँ, इसका लेफ्ट साइड का राइट साइड का दोनों का एक एक प्रोफाइल बना लेता हूँ. फर्स्ट दिस वन.
दिस वन। इनके कलर चेंज कर देता हूँ मैं दोनों के। Suppose this is the right side and this is left side. Yeah. And graph is one। मुझे ये दोनों प्रोफाइल है। ये RHS की एक एक LHS साइड की है 3.5 3.5। इन दोनों को मुझे इसमें हाईलाइट करना है जो मास्टर हमारा इसमें बनाया था। सो जस्ट सेलेक्ट द प्रोफाइल व्यू and here you will get the option is superimpose profile। Okay, now select the source file। source file आपका क्या होगा? This one। I am selecting this। now select the destination profile view। select the profile view and यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपको कहाँ से कहाँ तक आपका जो है जो अलाइनमेंट का जो प्रोफाइल है वो आपको सुपर इम्पोज करना है। सो वी जस्ट वांट टू सुपर इम्पोज फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड। ठीक, ओके। सेम थिंग फॉर नेक्स्ट वन। क्लिक करेंगे एंड डेस्टिनेशन प्रोफाइल लाइक, ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पे दोनों प्रोफाइल आ गई है, राइट। ये आपकी NGL है। ये आपका एक आई थिंक ये आपका लेफ्ट साइड का 3.5 है, ठीक है। और ये वाला आपका राइट साइड का 3.5 है। और ये आपका NGL है, ग्रीन वाला। ये आपका डिजाइन प्रोफाइल होगा, राइट। इससे आप क्या चेक कर सकते हैं कि आपका जो रोड का एज होगा 3.5 पे, यहाँ पे इस पर्टिकुलर लोकेशन पे वो कितना होगा, किस साइड में डाउन होगा और किस साइड में अप होगा, राइट। ये आपको आइडिया लग जाता है। अगर मैं ये इसकी जगह 7 मीटर का करूंगा या और ज्यादा का करूंगा तो उसका एलिवेशन डिफरेंस दोनों का डिफरेंट आएगा वहां पे, अगर आपका NGL में कोई डिफरेंस है दोनों साइड में, राइट। यही एप्लीकेशन है इसकी। Yes, yes. ओके, नाउ सपोज आपके पास में यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जो कि आपका लेटेस्ट से यहाँ पे एक ब्रिज आ गया, ठीक है। एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बॉक्स कलवर्ट है इस तरीके से, राइट। आपको इसको हाईलाइट करने हैं यहाँ पे, तो आप कैसे करेंगे? ठीक है, मेरे पास दो ऑप्शन है। आइदर आई विल यूज द स्टेशन इक्वेशन और आई विल क्रिएट सम पॉइंट जो कि इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि ये वाला पॉइंट जहाँ पे स्टार्ट होगा वो स्टार्टिंग वाला होगा और ये एंड होगा इस ब्रिज का। तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक कोको पॉइंट्स क्रिएट कर लेता हूँ मैनुअली एंड इसको मैं कहता हूँ ब्रिज स्टार्ट एस पॉइंट। एलिवेशन मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है ये सेकंड पॉइंट होगा, ये ब्रिज एंड एलिवेशन नहीं चाहिए, ठीक है। एक है यहाँ पे, हाँ इसको मैं बॉक्स कलवर्ट का स्टार्ट बोलता हूँ, बॉक्स कलवर्ट स्टार्ट पॉइंट एंड ये आपका एंड पॉइंट होगा। आप कोई भी
इसको नाम दे सकते हैं जो भी आपका होगा, ठीक है, जिस हिसाब से आपको रिप्रेजेंट करना है प्रोफाइल के अंदर। बिकॉज ड्राफ्टर्स क्या करते हैं, वो आपको मैनुअली यहाँ पे बेचारे यहाँ पे वो चेक करते हैं और उसको वो मार्क करते हैं। इफ दे गेट दिस पॉइंट, दे डायरेक्टली हाईलाइट दिस पॉइंट इनटू द प्रोफाइल। तो सपोज मुझे इन पॉइंट को हाईलाइट करना है, सो जस्ट सेलेक्ट दिस प्रोफाइल एंड जस्ट प्रोजेक्ट द ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं सिलेक्ट करूँ फर्स्ट पॉइंट को एंड सेकंड पॉइंट, यार आता हूँ मैं सब। दिस इज योर थर्ड पॉइंट एंड दिस इज योर फोर्थ पॉइंट। अब उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है स्टाइल का, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका वो पॉइंट कैसा दिखेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको एक ड्रिल होल टाइप में दिखाना चाह रहा हूँ उन पॉइंट्स को। ठीक है, आपका एलिवेशन क्या होना चाहिए इन पॉइंट का, तो जो मेरे डिजाइन 2 पे होगा वो इनका एलिवेशन होगा, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा और यहाँ से पिक कर लेगा, राइट। अब प्रोजेक्शन में देखिए यहाँ पे आईएनडी प्रोजेक्शन है, तो ये आपके स्टाइल सेट में अभी आपका उसका इंफॉर्मेशन नहीं होगा उस पॉइंट का कि क्या स्टेशन है, वो तो आ जाएगा। बट इसके अंदर आपका ये ब्रिज को क्या इंफॉर्मेशन है कि वो कौन सा है, ऑब्जेक्ट क्या है, वो नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूँ इसमें मॉडिफाई कर लेता हूँ एंड आई विल ऐड द एडिशनल इंफॉर्मेशन। देखिए यहाँ पे स्टेशन है न, उसके एलिवेशन है, मुझे चाहिए कि उस पॉइंट के साथ में जो मैंने उसका रोड डिस्क्रिप्शन दिया है, ब्रिज स्टार्ट ब्रिज एंड, वो भी उसके साथ में आए, राइट। तो डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ उसके बारे में एंड फ्रॉम हियर आई विल सिलेक्ट द सोर्स ऑब्जेक्ट टाइप कि आपका वो क्या है ऑब्जेक्ट सोर्स टाइप। एंड इसको अगर डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करना है तो आपका फॉर्मेट है ही सही, यहाँ पे आप इसको चेंज कर दीजिए। क्लिक ओके एंड अप्लाई, क्लिक ओके, क्लिक ओके एंड ओके। मैं प्रोफाइल में देखूंगा सेम चीज ये वाले, तो देखिए ये पॉइंट आ गए मेरे को, राइट। ये मेरा कोगो पॉइंट, अभी इसको मैं चेंज कर दूंगा जो कि ब्रिज 1 एंड ब्रिज 2 को स्टार्ट एंड एंड को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। यहाँ पे देखिए स्टेशन आ गया, उसका एलिवेशन आ गया। अभी आ रहा है जस्ट कोगो पॉइंट, ओके। एंड दूसरे पॉइंट यहाँ पे होंगे जो हमने मार्क किए थे, यहाँ पे कोगो पॉइंट लिखा आ रहा है, बट मैं इसको चेंज करके जो हमने लिखा है एग्जैक्ट वो आ जाएगा। थैंक यू। हेलो, ओके। यस सर। ओके। तो अभी क्या करना है, मैं इसके लेबल को मुझे चेंज करना है। लेबल स्टाइल, अब क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ से स्टेशन में जाएंगे एंड अगर इससे नहीं आ रहा है तो देन वी विल सेलेक्ट द रोड डिस्क्रिप्शन या ऑब्जेक्ट नेम क्या है आपका, उससे आ जाएगा। चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने दिया था बॉक्स कलवर्ट स्टार्ट पॉइंट एंड ये बॉक्स कलवर्ट एंड पॉइंट। तो ये बहुत यूजफुल होता है जब आपको आपके बहुत सारे पॉइंट हैं, आपका बहुत बड़ा स्ट्रेच है, फॉर एग्जांपल 100 किलोमीटर स्ट्रेच है, तो आप एक एक को मार्क नहीं कर सकते, राइट। तो इस केस में क्या करते हैं, हम पॉइंट्स कोगो पॉइंट्स क्रिएट कर लेते हैं। एंड अगर आपके पास एक्सेल में ही वो कोगो पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स आपके मार्क हैं वो उसका कोऑर्डिनेट्स है, ईस्टिंग नॉर्थिंग है, आपका उसका रोड डिस्क्रिप्शन आपने लिखा हुआ है, सो यू जस्ट इंपोर्ट दैट फाइल और उस जो पॉइंट्स आएंगे उनको आप डायरेक्टली प्रोजेक्ट कर पाएंगे आपके प्रोफाइल के ऊपर। और इसका स्टाइल सेट आप बना सकते हैं कैसा भी जैसा आपको बनाना है। इसमें कोई क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट? सर एक बार वेट कर सकते हो फिर से इसको, कोको पॉइंट्स का बिल्कुल, प्रोसेस। बिल्कुल सर। सपोज एक और ले लेते हैं हम, यहाँ पे एक और ब्रिज बना लेते हैं हम। सपोज यहाँ पे एक बड़ा
बड़ा कोई बड़ा सा ब्रिज है आपका। सपोज यहाँ पे आपका कोई मिड पॉइंट है, राइट। तो मेरे पास 3 पॉइंट मुझे रिप्रेजेंट करने हैं। पहला इसका मिड पॉइंट का मिड ब्रिज और एंड ऑफ द ब्रिज। ओके। तो अगेन आपको क्या करना है, पॉइंट्स में जाना है, यहाँ से मैनुअल पॉइंट्स क्रिएट करने हैं, कोको पॉइंट्स। पहला पॉइंट इसका बाय नेम दे देना है ब्रिज। स्टार्ट पॉइंट, या फिर आप ब्रिज 1, वो ब्रिज 1 था तो ये इसको मैं ब्रिज 2 कर लेता हूँ। एंड एस टी पॉइंट कर देंगे, एस टी पी लिख देता हूँ मैं। तो ये मेरा पहला पॉइंट हो गया, एलिवेशन ऑटोमेटिकली हम पिक कर लेंगे। सेकंड, ये मेरा ब्रिज इसी का मिड पॉइंट है, तो ब्रिज 2 मिड पॉइंट। एक ये है ब्रिज 2 एंड पॉइंट। ओके। अब हमारे पास तीनों पॉइंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसको हाईलाइट करना है इसके अंदर। सेलेक्ट प्रोफाइल व्यू, जो आपका ये ग्रिड है इसको सिलेक्ट करना है। देन यू हैव द ऑप्शन इज प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट टू प्रोफाइल व्यू। देन सेलेक्ट द पॉइंट्स, ये आपको सिलेक्ट करना है, फर्स्ट, देन मिड पॉइंट, दिस वन एंड दिस वन, राइट। अब यहाँ पे आपका स्टाइल सेट है, वो आप जैसे चाहो वैसे आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। स्टेशन से करना है स्टेशन कर लीजिए इस टाइम पे। तो आपका लेवल क्या लेगा वो आपके ऊपर है कि आप क्या डिफाइन करना चाहते हो। जनरली हम उसको डिफाइन करते हैं डिजाइन प्रोफाइल पे ही, बट आप अगर उसके एनजीएल पे डिफाइन करना चाह रहे हो तो आप उसके एनजीएल पे भी डिफाइन कर सकते हो। देन हियर इज द ऑप्शन प्रोजेक्शन का, कि आप उसमें किस स्टाइल में आपको दिखाना है। तो अभी हम ये यूज कर रहे हैं अबव वाला, राइट। अपना खुद का भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे बॉटम में, यहाँ पे देखेंगे ये आपका ब्रिज 2 स्टार्ट पॉइंट है, ये आपका मिड पॉइंट होगा, और ये आपका एंड पॉइंट होगा ब्रिज का, राइट। तो इस तरीके से आपके जो भी कोई ऑब्जेक्ट्स होते हैं जनरली, हम उनको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वन गो में। हाँ, हमें मैनुअली यहाँ पे नहीं चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे हमें लेवल देना है, क्या लेवल देना है, मार्किंग करनी पड़ती है कई बार, तो वो नहीं करना है, राइट। सपोज अगर मुझे यहाँ का लेवल चेक करना है इन बिटवीन, अगर आपके यहाँ पे प्रोफाइल में, तो वो कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप जैसे सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे ऑप्शन आते हैं स्टेशन एलिवेशन का, ठीक है। तो आप कोई पर्टिकुलरली कोई स्टेशन है, जैसे मुझे 5000 का चेक करना है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये 5000 को उसने पिक कर लिया, जहाँ पे भी होगा, कहीं ना कहीं तो आ रहा है ये 5000 कहाँ है। चेक फर्स्ट कहाँ पे आ रहा है 5000, 544 समवेयर हियर, ओके। 520 यहाँ पे आ रहा है, ओके। तो आपको क्या करना है चेक करने के लिए,
स्टेशन, यहाँ से आपको स्टेशन डिफाइन कर लेना है, जैसे 5000 पे एग्जैक्टली चाहिए। देखिए लाइन आ गई। ठीक है। अब यहाँ से आप लेवल डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं, जैसे मुझे इस कट लेवल चेक करना है एग्जैक्टली यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका लेवल एंड चेंजेस आ जाएगा कि आपका लेवल क्या है। राइट। तो इन बिटवीन कहीं पे भी आपको लेबल अगर चेक करना है आपके डिजाइन प्रोफाइल में, तो आप चेक कर सकते हैं। इवन इसका डिस्टेंस भी आप चेक कर सकते हैं कि जैसे सपोज इन दोनों के बीच का क्या डिस्टेंस होगा। हालांकि वो नीचे रहता है आपके इसमें कि ये इन दोनों का डिफरेंस इज माइनस का 1.07 है। ठीक है। डिजाइन प्रोफाइल आपका डाउन है एंड एनजीएल आपका, तो ये कट में है आपका। ठीक है। बट हम इसका डिस्टेंस भी मार्क कर सकते हैं। डिस्टेंस मार्क करने के लिए सेम आपका डेप्थ है यहाँ पे। सपोज मेरे को अगर यहाँ से इसकी डेप्थ मेजर करनी है, तो आप ये डेप्थ भी यहाँ पे मार्क कर सकते हैं लेवल की। राइट। तो ये लेबल मार्किंग है जो जनरली ड्राफ्टिंग में हमारे सबसे ज्यादा काम आती है। दूसरा है कि अगर आपका जो स्ट्रेच है वो काफी बड़ा हो, जैसे ये है, मुझे इसको तीन में डिफरेंट, तीन प्रोफाइल के अंदर डिवाइड करना है। आई डोंट वांट दिस मच द लॉन्ग स्ट्रेच, ओके, प्रोफाइल। तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। तो स्प्लिट करने का क्या तरीका है कि मैं पहले इसको कॉपी कर लूंगा। सपोज 1 2, तो इसलिए ये यूज होता है जब आप ड्राफ्टिंग करते हैं, फाइनल सबमिशन करते हैं, तो सबसे ज्यादा काम वहीं पे आता है कि आपका छोटा छोटा स्ट्रेच में आपको सीट्स काटनी होती है। तो उस केस में आपके ये काम आता है कि आप जहाँ से जिस स्टेशन का आपको प्रोफाइल दिखाना है, आप वहां तक उसको दिखा सकते हैं। कई बार क्या कहते हैं, एमवी कमांड लगा के आपका एक ये अलग कर देते हैं, ये वाला पोर्शन, एंड बाकी को एमवी के थ्रू इसको ड्रैग कर करके लगा लेते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपके ड्राफ्टर कौन से मेथड को फॉलो करते हैं। राइट। तो सपोज मुझे इसको करना है, स्टेशन एक रेंज बाउंड में करना है, जैसे ये 10 किलोमीटर है तो आई विल सेलेक्ट 2 किलोमीटर ओनली। तो जो मेरा स्ट्रेच है ये 2 किलोमीटर का स्ट्रेच हो गया। राइट। इस वाले को मैं 2 किलोमीटर से लेट्स से 7 किलोमीटर कर देता हूँ। तो ये मेरा 7 किलोमीटर से हो गया, और जो रेस्ट है उसको मैं 7 किलोमीटर से आगे का कर देता हूँ। ठीक है। तो मेरे पास तीनों आपके प्रोफाइल आ गई। राइट। अगर आपको और स्प्लिट करना है तो आप अपने हिसाब से नंबर ऑफ कॉपीज बना के इसके आप उसको स्प्लिट कर सकते हैं, फिर एक्सप्लोड करके आप वहां पे ले जा सकते हैं। एक तो ये भी तरीका है। दूसरा तरीका होता है कि आपके ऑटोमेटिकली इसमें सीट क्रिएशन होती है। तो हम वो ये देखेंगे जब हम सीट प्लान प्रोडक्शन में देखेंगे कि हम कैसे बाय यूजिंग अ सिविल 3D सेल हाउ वी कैन क्रिएट अ सीट्स। ओके। तो उसमें मुझे ये स्प्लिट करने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, सीट यहाँ पे क्रिएट कर देगा। अब तो यहाँ पे कोई किसी को कोई डाउट हो यहाँ तक, जहाँ प्रोफाइल लेबलिंग से लेकर प्रोफाइल बैंड सेट तक, मैं अभी इसको चेंज करना बता देता हूँ कि आपका अगर आपको खुद के ही स्टाइल में लिखना है यहाँ पे, जैसे एफआरएल की जगह एनजीएल लिखना है, सॉरी इसको डिजाइन प्रोफाइल लिखना है, इसको एनजीएल लिखना है, इसको कट फिल लिखना है, तो वो कैसे लिखेंगे। इसके अलावा कोई अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। किसी ने नोटिस किया यहाँ पे एक चीज की, एक बैंड कम है यहाँ पे जो हम जनरली सबमिशन में देते हैं। प्रोफाइल डाटा है कुछ। कोई भी एक, एनीवन जिसने नोटिस किया हो। नहीं। इसके लेवल कहाँ पे है सर, वो प्रोफाइल डाटा चेंज पे।
एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बैंड है वो नहीं है इसमें अभी फिलहाल, जो हम जनरली जब भी हाईवे कॉरिडोर डिजाइन करते हैं तो हम उसको देना जरूरी होता है। वो कौन सा बैंड है अभी जो हमने नहीं ऐड किया हुआ? आप देखेंगे मैंने यहाँ पे सुपर एलिवेशन ऐड नहीं किया हुआ है। राइट। आप कहीं आपको किसी को दिख रहा है सुपर एलिवेशन का बैंड? क्योंकि मैंने ऐड नहीं किया है यहाँ पे अभी। तो पहले सुपर एलिवेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे सुपर एलिवेशन अप्लाई करना पड़ेगा। राइट। अब सुपर एलिवेशन कैसे अप्लाई करते हैं? तो यहाँ पे देखेंगे जैसे आप अलाइनमेंट को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सुपर एलिवेशन का। राइट। तो यहाँ से क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट सुपर एलिवेशन नाउ। यहाँ पे आते हैं आपके डिफरेंट मेथड कि आपको किस तरह का आपका रोड है। पहले आप वो डिसाइड करते हो कि अनडिवाइडेड है कि डिवाइडेड है। ठीक है। आपको सेंटर लाइन से उठाना है कि कहाँ से उठाना है। ठीक है, ये पिवट मेथड है आपकी कि सेंटर लाइन से, इनसाइड से करना है, आउटसाइड से करना है, लेफ्ट साइड से करना है, राइट साइड से करना है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, अनडिवाइडेड है एंड मुझे सेंटर से यहाँ से करना है, सेंटर बेस लाइन लेना है। ठीक है। हायर साइड होगी वो मेरी लेफ्ट एज साइड होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे देखेंगे आपका क्या है, इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ। ठीक है। क्या आपका सिमेट्रिक रोड है कि आपका डिफरेंट है? ठीक है। तो अगर आपकी लेंथ सिमेट्रिक है 3.5 3.5 है तो आप सिमेट्रिक ले सकते हैं। अगर डिफरेंट है तो आप डिफरेंट लेंगे। तो मैं यहाँ पे अगर आप 3.5 में इसको ले लेता हूँ। ठीक है। आपका नॉर्मल कितना क्राउन क्या रहेगा? लेफ्ट साइड में -2.5 एंड दिस साइड ऑल्सो 2.5। ठीक है। आपको अगर शोल्डर पे करना है कैलकुलेट तो आप शोल्डर पे कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करना, आपका पे शोल्डर नहीं है, ओनली अर्थन शोल्डर है, तो आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। राइट। देन यहाँ पे अगेन, हाँ, क्योंकि मेरे पास ओनली एस्तो है तो मैं वो एस्तो ही यूज करूंगा। ई मैक्स के ऊपर डिपेंड होता है वहाँ पे एस्तो में कि आप 6 के लिए कर रहे हो, 8 के लिए, 10 के लिए, 12% के लिए या 4% के लिए ही यूज कर रहे हो। तो मैं 6% मैक लेके चल रहा हूँ। एंड आपका 2 लेन में ये 4 लेन ले लेता हूँ। एंड ये अटेनमेंट मेथड होता है। तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, कैलकुलेट कर लेगा कि व्हाट शुड बी द मैक्सिमम, आपका सुपर एडिशन कितना जाएगा वहां पे। ठीक है। 6 से तो ज्यादा जाएगा नहीं क्योंकि हम 6 ही मैक्सिमम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। राइट। अब मुझे क्या करना है, इसके जो क्रिटिकल, हाँ जी, हेलो, कोई क्वेश्चन? ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि आपके जो क्रिटिकल पॉइंट्स है, सुपर क्रिटिकल पॉइंट्स, वो भी हाईलाइट नहीं हो रखे हैं। सो हम क्या करते हैं, पहले लेवल में जाके जो सुपर क्रिटिकल पॉइंट्स है सुपर एलिवेशन के, हम उसको ऐड कर लेते हैं। ओके। एंड अप्लाई, क्लिक ओके। बेसिक में मिनट। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट्स है आपके वो ऐड हो गए हैं। यहाँ पे आपका -2.5 टू 2.5 है। ठीक है। यहाँ पे ये 6% है, यानी कि आपका जो फुल सुपर एल्यूशन होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा एंड जो होगा वो यहाँ पे होगा। एंड देन नॉर्मल आपका यहाँ पे हो जाएगा। और ये आउटर एज में है। अगर आपको सेंटर से उठाना है दोनों साइड में तो आपको सेंटर वाला सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी देखेंगे कि आपका आउटर एज 2.5 उठा हुआ है और ये वाला जो है माइनस के 2.5 पे है। राइट। तो आपको कौन सा अप्लाई करना है सुपर एल्यूशन, किस तरीके से अप्लाई करना है, वो मेथड आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे अगर हम वापस से चेंज करें इसको,
एक ये टैबलर आ जाएगा आपके पास दोबारा से, ये वाला। ठीक है। इफ यू वांट टू कैलकुलेट अगेन, देन गो विद द एंटायर अलाइनमेंट। आपकी टोटल 5 कर्व है। कौन सी डायरेक्शन में, ये भी आपका पता लग जाता है कि लेफ्ट है कि राइट है। ठीक। देन अगर मैं अनडिवाइडेड जाऊं, सेंटर बेस लाइन से जाऊं, ओके, 3.5 के के एंड फिनिश, तो वो रिकैलकुलेट कर देगा। ठीक है। अ, अब मैं चेक करूंगा क्रिटिकल पॉइंट्स को अगेन। तो देखिए यहाँ पे दोनों साइड में सेंटर लाइन से इधर -2.5 और इस साइड का माइनस का 2.5। और ये आपका जो फुल सुपर एलिशन जो स्टार्ट होगा, मतलब आपका यहाँ से 2.5 से 2.5 जाके ये यहाँ पे ये पॉइंट है जहाँ पे आपका फुल सुपर एलिशन स्टार्ट होता है कर्व पे। राइट, -6% से लेकर +6% तक। राइट, और आपका ये फुल सुपर एलिशन एंड यहाँ पे हो जाएगा। देन इट विल गो टू द नॉर्मल एट दिस लोकेशन। ये आपका रिवर्स वाला है। राइट। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस बैंड को मैं अपने इसमें भी ऐड कर सकता हूँ। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, अगेन से इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, फर्स्ट टू एंड, एंड गो टू अगेन बैंड सेट। यहाँ पे देखेंगे अभी सुपर रिलेशन का बैंड नहीं है। राइट, तो आई विल ऐड द सुपर रिलेशन। अभी इसका स्टाइल है, ये डिफरेंट है। ठीक है। तो आप इसके स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक सुपरलेशन आया होगा, ये वाला, यहाँ पे मैक फुल है इस लोकेशन पे। देन आपका यहाँ पर एंड हो रहा है फुल सुपरलेशन, एंड देन बैक टू द नॉर्मल। तो इस तरीके से आप सुपरलेशन के बैंड को भी ऐड कर सकते हैं। इवन आपका जो सुपरलेशन स्कीमेटिक आता है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ से आपका सुपरलेशन व्यू आता है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ इसको, तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा एक और चेक होता है इसमें, साइड डिस्टेंस का। अगर आप, तो यहाँ पे देखेंगे साइड डिस्टेंस एक का ऑप्शन है। जनरली हम कॉरिडोर बनाने की बात भी कर सकते हैं क्योंकि हमारा अभी कट फिल नहीं है। बट अगर आप फिर भी यहाँ पे चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको अलाइनमेंट सेलेक्ट करना है, आपका प्रोफाइल करना है, आपका स्टार्ट टू एंड स्टेशन करना है। इसकी जरूरत नहीं है अभी। आपका एनजीएल, ये जो है सरफेस, ये एनजीएल है। इंटरवल्स आपके 20-20 मीटर पे चेक होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको कितनी मिनिमम साइड डिस्टेंस पे इसको चेक करना है। ठीक है, बेस्ड ऑन एज पर आईआरसी आपको चेक करना है कि मिनिमम एज पर जो डिजाइन है उसके अकॉर्डिंग आपका एसएसडी कितना आना चाहिए। राइट, आपका हाइट क्या होना चाहिए, आपका आई ऑफसेट कितना होना चाहिए, और टारगेट जो हाइट होता है यानी कि ऑब्जेक्ट हाइट होगा वो कितना होना चाहिए। ठीक है। तो इसकी एक वैल्यू होती है, कितनी होती है सर? एक ड्राइवर आई हाइट होती है जो हम जनरली एसएसडी में लेते हैं। 1.2, क्या सर? I think sir 1.2. 1.2। राइट। ये भी जनरली दोनों के केस में अलग होती है। अगर एसएसडी ले रहे हैं तो अलग है, एंड ओएसडी ले रहे हैं तो अलग होता है। ठीक है। ये अगर हम ये आई 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 हाइट तो सेम रहेगा, बट जो टारगेट ऑब्जेक्ट है वो आपका चेंज हो जाता है। राइट। तो इसमें टारगेट हाइट कितना रहेगा सर? 0.2।
0.15। 0.15 सर या 0.2? जो भी सर डाल डाल दीजिए। ठीक है, मैं 0.2 ही डाल देता हूँ कि जनरली 1.5 आई थिंक रहता है, आई गेस। ठीक है, अब मुझे चेक करना है यहाँ पर कि मेरा जो एसएसडी हम चेक कर रहे हैं वो करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं आ रहा है। फिनिश। आप देखेंगे यहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली इसने ये चेक कर लिया। ठीक है, यहाँ पे आपके ऑब्स्ट्रक्शन आएंगे। ये वाले जो है ये एसएसडी है। आप इसकी रिपोर्ट भी निकाल सकते हो। जो ये वाला है ना, इसकी रिपोर्ट भी बनती है। राइट। तो एक रिपोर्ट आता है जनरेट करने का। एक मिनट में दोबारा अप्लाई करता हूँ। आई थिंक एक लोकेशन दिया था उसने। सेलेक्ट सिमिलर। ये रहा आपका। बेसिकली इसकी जो रिपोर्ट बनेगी ना वो यहाँ पे जाएगी, इस वाले डेटा में, न्यू ट्रायल के अंदर। तो ऑलरेडी वो बन चुके हैं। सेव टू डेस्कटॉप डेटा सेट, राइट डेटा न्यू। चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका ये आ गया। ठीक है, कि मिनिमम साइड डिस्टेंस आपका कितना चाहिए था और कितना आपको अवेलेबल है। इस रिपोर्ट से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कहाँ पे आपका एसएसडी है वो नहीं मिल रहा है। ये कुछ पॉइंट है। देखिए यहाँ पे आपका 62 मिल रहा है, ये 42 मिल रहा है, 22 मिल रहा है, यहाँ पे 10 कुछ मिल रहा है। राइट। यहाँ पे भी नहीं है। चेक कर लेते हैं ऊपर क्या लिखे हैं इनके। ये वॉयलेटेड को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वॉयलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये ऑब्स्ट्रक्शन पॉइंट्स है, ये जितने भी हैं। ये मिनिमम साइड डिस्टेंस है जो हमने प्रोवाइड की थी, जो कि आपकी 500 हमने प्रोवाइड की थी। एंड एक्चुअल साइड डिस्टेंस कितना मिला है वो हमें यहाँ से ये वाला है। तो ये वाला एक्चुअल साइड हमें मिल रहा है उन एवरेज जो हमने इंटरवल्स चेक किए हैं उस पे।
तो हमें इन पॉइंट्स पे साइड डिस्टेंस भी चेक करने पड़ेंगे कि आपके जो साइड डिस्टेंस है वो अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, बेस्ड ऑन आपका यहाँ पर आपने जो डिफाइन किया था, ऑब्जेक्ट हाइट इज आपका देखेंगे तो 0.2 का था, एंड आई जो हाइट थी वो 1.2 मीटर थी। बट एक्चुअल में कब देखते हैं ये, फाइनल जब हमारा यहाँ पे कट एंड फिल निकलता है तो उस टाइम पे हम चेक करते हैं, बिकॉज वहां पर भी हमारे को जब कटिंग एंड फिलिंग आ जाती है कहीं पे भी, तो वहां पे भी चेक करना पड़ेगा कि यहाँ से जो हम कट फिल आ रहा है क्या टेरेन है हमारा यहाँ पे, वो उसकी वजह से कहीं ये तो नहीं इफेक्ट हो रहा है। तो उस केस में हम फिर फाइनल एसएसडी को चेक करते हैं कि ये यहाँ से जो ड्राइव करके इधर जाएगा उसको ये व्हीकल्स प्रॉपरली दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ये हमें चेक करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कट फिल इस तरीके का आ गया कि मेरे को यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पे एसएसडी हमें वो मिलेगा ही नहीं। राइट, ये इस पाथ को चेक करेंगे। तो ये अगर ये पाथ पे आप बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको एसएसडी का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये वाला पाथ अगर आप इस फॉलो को फॉलो करेंगे तो आपको रेडियस इतना देना पड़ेगा। राइट, तो ये ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन भी दे देता है कि कहाँ पे कितनी आपको रेडियस यहाँ पे प्रोवाइड करने की जरूरत है, अगर आपको एसएसडी मतलब फॉलो करना है तो। इसमें कोई क्वेश्चन? बाकी हम ये कल भी देखेंगे जब हम कॉरिडोर क्रिएट करेंगे टीसीएस। सर बोल रहे थे फर्स्ट टाइम जो कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखा रहे थे एक्सेल शीट में, वो एक बार लास्ट टाइम, लास्ट में एक बार दिखा दीजिए। अच्छा सर, एक्चुअली मैं ट्राई तो करा, एक्चुअली मेरे पास क्या है ना, पेड वाला है नहीं, तो वरना बहुत इजीली आप क्या कर सकते हो, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। अब इतनी प्रॉब्लम नहीं आती वो सब करने में। क्या होता है ना, जैसे आप, मैं एक क्या दिखाना चाह रहा था, जैसे आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है। जी सर। ठीक है, जैसे मैं एक लाइट पोल की बात कर लेता हूँ। जैसे हम ये कॉरिडोर बना लेंगे तो हम लाइट पोल भी हमें प्लेस करने होते हैं, तो सपोज आपके अगर वो कोऑर्डिनेट होते तो मैं डायरेक्टली उनको वो प्लेस कर देता वहां पे। तो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे ले रहा था। हाँ, मैंने वो कोऑर्डिनेट भी बनाए थे। एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंट क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है ना, ये जो हमने पॉइंट क्रिएट किए थे, कहाँ गए ये वाले। ठीक है, इन्हीं को मैं क्या करता हूँ, एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। एक और पॉइंट था जो मैं डायरेक्टली कर सकता था यहाँ पे, और अब मुझे ऑप्शन मिल नहीं रहा। एनीवे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ, डेस्कटॉप पे करता हूँ।
इस नाम से किया था मैंने। पॉइंट्स। ये तो नहीं है। ये रहे। सपोज ये मेरे पॉइंट्स है वो सारे ना, जो मैंने अभी एक्सट्रैक्ट किए। ठीक है। अब मुझे इस पॉइंट्स पे कोई ऑब्जेक्ट प्लेस करना है फॉर एग्जांपल। हम क्या कर सकते हैं, इक्वल्स टू, या तो आप कोमा डिलिमिटेड फाइल में आप इसको सेव कर लो, या फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। तो इधर लाना पड़ेगा। मैं इसमें क्या करता हूँ, कोई सिविल का देखते हैं, 3D मॉडल होंगे ना हमारे। H 2D है। मैं हाईवे के एक ऑब्जेक्ट लेना चाह रहा था, कुछ लाइट पोल समथिंग। हाँ ये रहे हाईवे में। ये 3D मॉडल्स हैं, हाँ बेसिकली साइनेजेस हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको ले लेता हूँ। ओके। अब मुझे इसको प्लेस करना है। कॉपी दिस, फिर बेस को सेलेक्ट कर लेना है। सपोज ये बेस होगा, एंड जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, इस डिस्प्लेसमेंट की जगह आपको ये सब कॉपी कर लेना है, एंड अगेन यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। तो यहीं से करते हैं।
कोई नहीं, मैं दोबारा कर लूंगा। सर इसको शायद कुछ प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, एरर है ना। मैं कल में ही बता दूंगा, बट सेम मेथड है कि आपका ये जो ऑब्जेक्ट होगा इनको कोऑर्डिनेट्स पे प्लेस कर देगा इस मेथड से आपके। तो मैं कल जी जैसे हम स्टार्ट होंगे तो मैं स्टार्टिंग में बता दूंगा कुछ तो मिस्टेक हो रहा है इसमें। ठीक है सर। ओके। ठीक है सर। ओके। कल स्टार्टिंग में आती सबसे पहले मैं ये ऑब्जेक्ट प्लेस का ही बताऊंगा आपको। वैसे मैं भी बताने वाला था जब मैं फाइनल जब कॉरिडोर बना देता तो मैं ये लाइट पोल लेके इन पे प्लेस करता, बट कुछ ना कुछ इश्यू आ रहा है इसमें कोऑर्डिनेट्स पे प्लेस करने में। जी। ठीक है। अगर अभी यहाँ तक कोई सर, आप प्रैक्टिस कर लीजिए, और प्लीज किसी ने अगर इंस्टॉल किया है सिविल 3D कंट्री किट, तो यहाँ पे एक लोकेशन में बता देता हूँ, पाथ बता देता हूँ, तो वो मुझे प्लीज एक शेयर फाइल कर दें। डॉट एक्सएमएल फाइल आती है वो। मैं पाथ बता देता हूँ आपको। जैसे आप डिजाइन क्राइटेरिया में जाएंगे ना, तो यहाँ पर ये वाला पाथ मिलेगा आपको। तो यहाँ पर वो डॉट एक्सएमएल फाइल आएगी कंट्री किट वाली। इसके अंदर प्रोग्राम डेटा ऑटोडेस्क जो भी आप डाउनलोड करेंगे, 24 होगा तो 24 में 24 तक ही है, तो अगर आप 24 यूज कर रहे हैं तो 24 वाले में आ जाएगा। देन ENU डेटा कॉरिडोर डिजाइन एंड मैट्रिक, मैट्रिक के अंदर फिर ये आपका डॉट एक्सएमएल फाइल आएगा। ठीक है। तो अगर किसी ने इंस्टॉल कर लिया हो तो प्लीज शेयर कर दें, या नहीं किया हो तो कल कर ले, मेरे पास है नहीं अभी वो। ओके। ठीक है। ओके। थैंक यू फॉर टुडे। आई थिंक Tanya is Tanya, are you there? ओके। ठीक है। कल मिलते हैं फिर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।